हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीखा था। अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप होता है, जैसे उसमें होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 कंसीडर करेंगे। ऐसे ही ग्रुप सेकेंड ग्रुप के लिए हमेशा +2 कंसीडर करेंगे। और ग्रुप सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम एंड बेरियम। 13 ग्रुप के लिए हम कंसीडर करेंगे +3। ऑक्सीजन के लिए कंसीडर करेंगे -2। जैसे वाटर में है H2O -2, अल्कोहल ROR -2। ठीक है। परऑक्साइड के केस में हम -1 कंसीडर करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। और ये फ्लोरीन कंपाउंड के केस में +2 कंसीडर करेंगे। नाइट्रोजन के केस में अगर नाइट्रोजन किसी अमोनिया है या एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमीन है या कोई नाइट्राइट है, तो उसमें हमेशा -3 कंसीडर करेंगे। और नाइट्रोजन जब कभी भी ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, जैसे NO2, NO, N2O, N2O5 एटसेट्रा, तो ऐसे केस में अलग अलग कंपाउंड में नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरी करता है। अब नेक्स्ट आते हैं हैलोजेंस पे। कभी भी हैलोजेंस जब डायरेक्टली मेटल से अटैच होगा, जैसे कैल्शियम क्लोराइड, तो वहां पे हमेशा -1 लेंगे। सोडियम क्लोराइड -1 लेंगे। ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड है हैलोजन का, जैसे HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, तो इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन वेरी कर रहा है, तो इसके साथ साथ हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट भी वेरी करेगा। इंटर हैलोजन कंपाउंड जो बनते हैं उसमें भी हैलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वेरी करता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड जैसे BrCl3, अभी लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मल चार्ज ब्रोमीन पे और क्लोरीन पे भी। ठीक है। ClF3, तो ये भी क्या है, ये जो है इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं। अभी पीरियोडिक टेबल में आपको बस इतना याद रखना है कि ये वाला ग्रुप जो है, इसको हमेशा फर्स्ट आप बोलेंगे, इसको सेकेंड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, 14, 15, 16, 17, फाइनली ये 18। ऐसे आपको याद रखना है। तो ये फर्स्ट ग्रुप के लिए हमेशा +1, सेकेंड ग्रुप के लिए हमेशा +2, एंड ये 13 ग्रुप के लिए +3, 14 ग्रुप के लिए +4 लेंगे, 15 ग्रुप के लिए +5। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं, अभी एग्जांपल्स करते हैं कुछ। जैसे सिंपलेस्ट कंपाउंड, एक पहला हम एग्जांपल लेते हैं CrO4 -2। ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अभी इसका हमको निकालना है, क्रोमियम का निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, तो इसको हम मान लेंगे X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन जो है 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना होता है -2। ठीक है, इज इक्वल टू चार्जेस पे कितना है, तो -2, x -8 इज इक्वल टू -2। अभी 8 को इधर लाएंगे तो x इज इक्वल टू 8 - 2 इज इक्वल टू +6। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितना हो जाएगा, +6।
अभी नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं सेकेंड, H3PO4 H3PO4। तो इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं पहले, यहाँ ऐसे ही कैलकुलेट कर लिए। फास्फोरस का इसमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हमने मान लिया X प्लस 4 ऑक्सीजन है इसमें, तो 4 इंटू -2 प्लस 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पे है, 3 इंटू प्लस इज इक्वल टू चार्ज कितना है इस पे 0। x -8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे +5। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं, H3PO3 फास्फोरस का कैलकुलेट करना है। तो फास्फोरस के लिए हम मान लेंगे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट इसका x। हाइड्रोजन 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, और इसके लिए लेते हैं कितना है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीजन कितना है 3 है, -2 कर लेते हैं इसके लिए इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 -6 इज इक्वल टू +3। तो x इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया इसका +3 हुआ फास्फोरस का। अभी फोर्थ हम एग्जांपल देखते हैं, H3PO2 फास्फोरस को क्या लेंगे x प्लस हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट का इसका +1 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2 मल्टीप्लाई विद -2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस whole molecule is neutral. So x plus 3 minus 4 is equal to 0. It gives x is equal to +1. So oxidation state of phosphorus in this molecule is +1. Now example 5, just H2SO3. This is sulfurous acid. Sulfurous acid. No, this is H2SO4 and this is sulfuric acid. Okay. So we need to calculate oxidation state of sulfur. So first of all, just we have considered the oxidation state of sulfur is X. Oxidation state of hydrogen is +1, but the number of hydrogen is 2. So 2 multiplied with +1 plus 4 into multiply with -2. We have taken 4 because number of oxygen atoms are 4 is equal to 0 because this molecule has no charge. So x plus 2 minus 8 is equal to 0, and finally it gives x is equal to +6. So sulfur and sulfuric acid is in +6 oxidation state. Now example number 6, H2SO3. This is sulfurous acid. We need to find out oxidation state of sulfur. So x plus 2 into +1 plus 3 into -2. It gives x plus 2 minus 6 is equal to 0. So x is equal to +4. So oxidation state of sulfur is sulfurous acid is +4. Now next to example number 7, H2SO3. Okay, H2SO3. So watch it carefully. Here number of sulfur is 2. So we need to take it 2x plus 2 into +1 plus 3 into
minus 2 is equal to 0. So 2x plus 2 minus 6 is equal to 0. So 2x is equal to 4, x is equal to plus 2, x is equal to plus 2. Now, our next example number 7 is 8. Example number 8 will be HClO4. HClO4. We need to find out oxidation state of chlorine in this oxyacid of chlorine. So X plus 1 because number of hydrogen is 1 and oxidation state of hydrogen is considered to be plus 1 plus 2. 4 oxygens are here, so 4 multiplied with minus 2 is equal to 0 because this whole molecule is neutral. So x plus 1 minus 8 is equal to 0. X will be plus 7. So oxidation state of chlorine in HClO4 will be plus 7. Now example number 9. HClO3. Okay, HClO3. X plus 1 for this hydrogen, plus 1, and for this minus 2, and this is x plus 3 into minus 2 is equal to 0. So x plus 1 minus 6 is equal to 0. Finally x is equal to plus 5. Example number 10. HClO2. We need to find out oxidation state of chlorine. So x plus 1 plus 2 into minus 2 is equal to 0. So x plus 1 minus 4 is equal to 0. X is equal to minus plus 3. Now next example is 11 and it will be HClO. X plus 1 minus 2 is equal to 0. Then x is equal to plus 1. And finally 13th example is HCl. Okay, so 1 plus x, 1 for hydrogen and x for Cl is equal to 0. X is equal to minus 1. Now we are going to take some different compounds like NiCl4. It carries minus 2 charge. Okay, so in case of cyanide, oxidation state of Cl is equal to minus 1 and Ni is equal to x. So x plus how many number of cyano groups are here? 4 cyano ligands are here. So 4 multiplied with minus 1 is equal to number of charges minus 2. So x minus 4 is equal to minus 2, then x is equal to plus 2. And finally nickel is in plus 2 state. Second one, NiCO4. These are neutral and oxidation state is 0. So nickel have also oxidation state 0. And third one, FeH2O plus. Okay?
Water has oxidation state 0, oxidation number 0. So iron will be directly x plus 0 is equal to 2 plus. So x is equal to plus 2. Fourth one is MnO4 2 minus. We have taken X for manganese. We have 4 oxygen with minus 2 state is equal to 2 negative charges are here. X minus 8 is equal to minus 2. So X will be plus 6. So plus 6 oxidation state of manganese. So now fifth example, MnO2. Take X for manganese. 2 into minus 2 is equal to 0 because this atom is, this molecule is neutral. X minus 4 is equal to 0 and X is equal to plus 4. Next example is 6 CR5. CR5. So this is very important. First of all, you need to know what is the actual structure of CR5. So CR5 has a butterfly structure. CR so this is peroxide. Here also peroxide one, and this is normal. So we already know that peroxide have plus 1. Okay. In case of peroxide, we have taken plus minus 1 oxidation state. Okay, and this will be plus 2. Here we need to take plus 2, and here plus minus 1. Okay, so X plus 4 into minus 1 because 4 oxygens are plus 1 into minus 2 is equal to 0. X is equal to plus 6. Next one example is FeCN6 4 minus. Okay, FeCN6 4 minus. We need to know the oxidation state of iron. So let's consider the oxidation state of iron is X plus, we have 6 cyano ligands and each cyano ligand have its oxidation number is minus 1. So 6 multiplied with minus 1 is equal to minus 4 charge, minus 4. So X minus 6 is equal to minus 4 and X is equal to plus 2. So iron is in plus 2 oxidation state. Okay. And for exercise purpose, you can take examples like CrO2, Cl2, this is chromic chloride, practicing MnO3Cl, NH2OH, OF2, N2O. Practice. Thank you.